Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. So nice to see all of you early this morning, or not very early, but we would like to start as soon as possible. تو کل کے رولز تو میرا خیال یاد ہوں گے کہ پلیز بی بریف to the point, and whatever you want to say, you're welcome to say, as long as it doesn't hurt anybody. And if you could just restrict yourself to your allocated time. Thanks for coming. تو آج کی جو محفل ہے، آج کی صبح، وہ مختص ہے صرف اس باتیں کرنے کے لیے، ان یادوں کو تازہ کرنے کے لیے جو 1960 کے آخری 5 سال میں ہم نے بنائی. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کوئی اس وقت کی کہانی، کوئی اس وقت کا چٹکلا، یا اس کے بعد کا بھی اگر چاہیں کوئی شعر سنانا چاہیں. تو جو کانسیپٹ ہے وہ اس قسم کا ہے جیسے گاؤں کے باہر یا چھوٹے قصبے کے درمیان میں ایک چوپال ہوتا تھا، وہاں پہ لوگ بیٹھتے تھے. کوئی بندہ باہروں آیا، انہیں کیا اللہ رکھیا تو مہینہ ہویا کتنے گیا سی؟ کہندا جی میں وانڈے گیا دا سی. اچھا سنا کی سی؟ اے اس وانڈے دی گل ہے جڑی سن 65 تو سن 70 تک اسیں دیکھی تے ساڈے تے بیتی. تے آج کی محفل کی جو ناظم اعلیٰ ہیں وہ ہیں قمر جلیل، اور ناظم ادنا ہوں میں ریاض بابر. He wants me to be a bad guy. بہت ادنا، تھینک یو. اچھا اسی وقت اسی بات پہ یاد آیا کہ اگر آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو 2 چیزوں کا خیال رکھیں. ایک تو کریکٹ کریں، تصحیح نہ کریں شعر کی یا اینیکڈوٹ کی. یار نہیں ہو کہ بھئی نہیں ہے گل انج ہوئی ہے تو انج ہوئی ہے. پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ. اٹ ول interfere with the feelings that person who is presenting and trying to create. Doesn't matter کہ reality کی ہے. It's more of a fiction, it's more of a feeling. So let it go. If you want to say بھپتی یا کوئی مذاق، اس کو 1-2 فکروں تک رکھیں. مجھے 2 والنٹیئرز چاہیے، ایک اس طرف سے، ہم ان کو لائیو مائک دے دیں گے، ایک اس طرف سے. اگر ہو سکے تو مائک میں بات کریں آپ، کیونکہ مائک کی بات جو ہے وہ ریکارڈ ہونے کا بہتر چانس ہے اور سب کو سننے کا بہتر چانس ہے. تو ہم آپ کے مرتبے کے حساب سے نہیں بلا رہے، ہم آپ اس طرح بلا رہے ہیں جیسے کہ یہ محفل کی رو چل رہی ہوگی، یا وقت کے تقاضوں کے حساب سے. اگر کوئی مجھے پتا ہو کہ اس نے بہت لمبی بات کرنی ہو بعد میں، اور خاص طور پہ جن لوگوں نے کل پریزنٹ کیا ان کو میں آخر میں بلوا رہا ہوں، مجھے معافی کا خواستگار ہوں پہلے سے. تو 2 شعر سنیے جو احاطہ کر لیں گے. وحید بھائی 2 شعر سنیے جو احاطہ کر لیں گے ہماری محبتوں کا اور ہماری 50 سالہ رفاقتوں کا. دوستی خواب ہے اور خواب کی تعبیر بھی ہے، رشتہ عشق بھی ہے، خاص طور پہ وحید نال رشتہ عشق بھی ہے اور یاد کی زنجیر بھی ہے. تو دوسرا شعر ہے مسیح و خضر کی عمر نثار اس پہ، وہ ایک لمحہ جو یاروں کے درمیان گزرے. کو مجھے لگ رہا ہے کہ بات کچھ بنی نہیں، تو میں اس کے متعلق، تو میرے دوست بات ہے کیا جس کے لیے مرا جا رہا ہوں. تو نے، آپ سب نے وہ سکھ اور وہ دکھ جھیلے ہیں جو میں نے جھیلے. تو مجھے سمجھتا ہے، اس سمجھے جانے میں ایک خاص چاشنی ہے. تو مجھے سمجھنے کے باوجود قبول کرتا ہے، اس میں ایک انتہا کا اطمینان. تو یہ ساری چیزیں جو ہم کر رہے ہیں آج، وہ اس قبولیت کے کو شرف دینے کے لیے. تو قمر آپ سب سے پہلے کسے بلا رہی ہیں؟ شائستہ پہلے کھا لو. راستے میں چباتی آئی ہے.
और शाहिद भाई जो हैं बहुत ही नफीस तबीयत के आदमी हैं, उनको भी हम दावत देंगे कि यहाँ पे तशरीफ़ लेके आएँ। तो जो प्रेजेंटेशन है वो वहाँ पे आके होगी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। तो हस्बैंड एंड वाइफ जब आ रहे हैं तो आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि कौन पहले कुछ कहना चाह रहा है, कौन बाद में। तो यहाँ तशरीफ़ लाइए, हम कोशिश कर रहे हैं। नसीर मुबशर इज़ हेल्पिंग मी आउट. Asghar Shah could be on Zoom. Were you able to connect with him? Okay. Okay. Let's not do the Zoom. खास तौर पे जब शाइस्ता आ रही हैं तो ये Excuse me, can we ask the question while somebody is presenting something? No, we are not presenting anything, we're just talking. No, even if you're talking, I mean. Assalamu alaikum. As you all know me as Shasta Shamim, and I entered medical school like with you after the war in 1965. And I think boys were like at least 120 or 130, and we were only 20 girls. And 9 of us were really what we call it in the boarding house. Kamar and 7 of us, in fact, also Asfa, Murtaza and Sora were in the same room. And there was lot of good memories, and I owe a lot to Kamar, who was always like my guardian angel for everything. And enjoyed some stressful time, but mostly good times. And then I met Shahid afterward, and life has been good. First 2 years, you guys really made our life hell. Some of them. We were coming from, at least I was coming from all girls school, and I was really on a high pedestal in that school because I was academically always excelled. And when we came and when the boys would tease us, I mean, it was something new. I was only 16. It felt literally like bullying. And I remember Kama would be on my side, standing to run into this class. So she would wipe all the remarks that boys have written on the board before anybody can get in. And I'm sure that some boys who wrote the remarks already probably saw the remarks, but she made sure that before any of the boys or girls get in, she would do that. But other than that, I mean, it was fun. And same thing used to happen at tuck shop. When we went to tuck shop, we had to duck and hide and run into the tuck shop, eat and come. But it got better after second year. Third year, fourth year, final year were really fun, and we had good times. उसके बाद शाहिद भाई आए और अशरफ भाग गए. Actually, Ashraf and all my friends never really went away. They're still very much part of our family. First of all, thank you so much for inviting me. I really appreciate it very much. I am not from the class of 1970, but I have always been welcomed just as a class of 1970, and really I sincerely appreciate that. Through this, I have formed some very, very personal and good relationships with the class of 1970, which will last me forever. Well, I was about to finish. Thank you so much. I really appreciate it, and thank you for all your support, friendship, and everything else. Thank you. अगले दोस्त जिनको मैं बुलवाने वाला था वो अभी तक पहुँचे नहीं, तो आउट ऑफ टर्न अगले दोस्त जो उनसे अगले वाले को बुलवा रहा हूँ, तो उनकी तारीफ अंग्रेज़ी के अल्फाज का उर्दू तर्जमा, बहुत ही ठहराव वाले आदमी हैं, अच्छा महसूस करते हैं, अच्छा सोचते हैं, अच्छा लिखते हैं और अच्छा पढ़ते हैं. ये मैंने अच्छा की गर्दान कर दी, तो अच्छा शुक्र वाला से किसी ने पूछा, लेकिन क्योंकि नसीम का अच्छा शुक्र वाला से कोई ताल्लुक़ नहीं, मैं इसको जाने देता हूँ. तो नसीम अहमद फ्लोरिडा से आए हैं, जो तशरीफ़ लाइए साहब. I was not expecting my turn to come that quickly. So what I have to awake yet? now what I have to say is a little different, and it's going to take a little bit more time. If you let me do that, please.
I was born and raised in Lahore, so all my education was in Lahore, in St. Martin High School and Government College Lahore. And then the first 2 years of medical school I spent in Liaquat Ali Medical College. Unfortunately, I could not get admission to King Edward because I was having too much good time in Government College Lahore. So I did not study as good, because that used to be, at that particular time when we were in Government College Lahore, we had 100 years centenary for Government College. And there were too many activities going on, and I was involved in some of those. So when I came in third years, the friends that I knew were only from Government College Lahore, which are Naim Pervez and Khalid Bhatt, Mother of course. Mother was in 6th grade with me. And then Howard Moin was there. So they introduced me to the rest of the friends, but what happened was, third year, as you all know, it goes into wards and small groups are formed, and you don't see other people. So what I'm going to say is, after we finished and came to US, is that okay? Oh, yeah, of course. Perfectly. So, Everything is fine. so the last 50 years, I have good memories of King Edward. The last 50 years that we have been here is much more important than 5 years that we spent in King Edward. This journey has been long and hard, and God has been good to us. I think we all worked very hard. We had desire to succeed, and which we did. And all of us are doing very well, mashallah. We are among the we are 1% of the wealthiest people in USA. You all know that. So we all got married here. I did particularly. And my children were born here. They are doing mashallah good. Some of them are doctors, lawyers, engineers. They had got married. And we are grandparents now, as you know, so we are all having a good time. So some of the things which I'm going to say is, first of all, I want to thank you, the committee, host committee, who had done a wonderful job for the last 2-3 days. We were having a good time. The first day was excellent with music and food. So among the friends, I have a few minutes to thank some of my friends that have been very good to me, and among them was my friend from high school. Naim Pervez is not here, but Mazhar, myself, Naim Pervez, Khalid Bhatt, Baloch, and Daud Bashir, we were from high school, St. Martin, and then I spent the most time with Naim Pervez from 6th grade to 2001, as a matter of fact. After we kept on seeing each other a few times in New York, but he moved to West Virginia in 1978, and then I had one more year to finish for GI. So he called me one day, said, "What are you doing after you finish your fellowship?" And I said, "I don't know." He said, "You must come and see where I am." So I went to visit him, and there was a very small town, less than 10,000 people, one Kroger, one McDonald's, and one Burger King. The airport was about one and a half hour away, but I said, "I'm going to come, my friend is there." So I went there, and 2 years later, we asked Idris Bhai to join us. So he came, and three of us had wonderful time for 22 years. I got married there. All my children were born in West Virginia, and Naim was my dedicated driver. He took me to Charleston. Because Nassim was always drunk. Not drunk. Can you imagine? No, not drunk, because nobody will let me drive. You know, on your wedding day, you don't drive. You don't drive. So he brought me there, and then we came back. So 2001, I moved away came to Orlando. But
with Adris and Naeem Pervez, we have wonderful time together. We almost met each other on a daily basis. We had gossip or a laugh together. Our family members, the children played together. My Fakhra Babi, she's not here, but she was responsible to taught my daughter how to recite Quran. Came to Orlando, and then I met, good fortune, mother was there, and Shasta and Shahad Bhai. So 4 of us again together. So last 20 years we have been together. They are a wonderful couple. MashaAllah, MashaAllah. They are so good to us. We have traveled together. A year ago, we went to northern Pakistan and toured together. And 2 weeks ago, we just came from Iceland. And thank you, Shahad. Thanks Shasta and Mother, to be my friends. And all of you over there. I hope we keep on meeting each other, and I pray to God for your good health, good fortune. Enjoy I think most of us are going to retire in the next 5 years. So, but some of them will keep on working. But whatever strength you have, please keep on doing, and we hope we keep on meeting each other on a yearly basis at least. And you're most welcome to come to Orlando anytime and stay with us. Next year going to be in Orlando. Please do come and stay with us. The best is yet to come. I'm going to, thank you so much, Dr. Nassim. I'm going to invite Shanaz, all the way from Pakistan. Please do come. Say something about you. Or if you want to say something right from there where From you there, are, that's fine. we can bring the mic to you. Well, I joined all of you in 1965 and had a very good time. All 5 years, first 2 years. नहीं बस चेप बैठ के थी. I don't remember, everything from King Edward, but do remember a few things. We used to go, I remember we used to go watch movies after every test in a Tonga. And used to go to तो an वो archery. थी आप, मैं भी उस टांगे के पीछे पीछे जाता. Acha. We used to go to Anarkali and Bano Bazaar a lot, eat fruit chaat, milkshake, and I think I had a bet with Kamar once that who can drink more milkshake. Maybe Kamar can remember. Oh, actually, I have that story I was going to tell. Oh. Well, I stopped at, I think, 7 glasses of milkshake. Kamar took another one, and I stopped. And then we had good time. We used to study together in final year, and that was the, I think, worst year because we had to study a lot. We used to be awake all night and almost all night. Had a big a glass of coffee and would sleep after 5 minutes. So we're so used to drinking that coffee. Remember? I thought it was tea, not coffee. Coffee, I wasn't remember that coffee available. too. Coffee, it was coffee. I remember once we were having tea, I think, and Naseem Sufi, maybe you know Naseem Sufi, she was senior to us. She came to our room and wanted some milk. She said, "Aapke paas milk hoga?" Nahi said, "Humne koi cow to nahi bandi hui." नहीं वो बॉयज हॉस्टल में थी खाओ. I'm saying it figuratively. Riaz Loan, don't get any ideas. Please. Then I came to US in 1971. I think in September. Kamar and Shaista Parveen had come before me in June or July, I think. And my flight was late. I missed a flight from London, and Kamar and Shaista had come to pick me up from the airport, but I didn't come by that flight. They changed my flight. So Shaista said later on,
We thought that you fainted at the airport, that's why you didn't come. Because I used to faint a lot in medical school. I remember once we were on rounds in a medical ward in, I think, third year, and a doctor was tapping pleural effusion from a patient, you know. He was sitting with a, you know, he was holding a big syringe, the doctor, and I passed out looking at him. Next day, the patient was asking me how I was feeling. वैसे 7 गिलास जो है ना मिल्क शेक पी के भी बंदा फेंट हो जाता है। नहीं, उस दिन नहीं फेंट हुई। बस यही थोड़ी सी बातें याद हैं। तो आप बहुत लाइक फाइट थी, so you have a very great mind, but you have a very good stomach also, apparently. Kamal had better stomach than me. All right. I'll tell you that story too, what happened. Thank you, Shanaz. Anything else? One more thing. I got married here at Shaista's house in 1976 and 74, sorry, 74. बस, I'm yeah. sorry, I couldn't come that my invitation card is in a bubble. It was an emergency wedding. The emergency was that my father had passed away. My father had passed away before that, and Shaista's mother was here with her, and my family, contacted her to get me married before breaking the news to me. That was the emergency. We wanted some support system to be available for her when she was alone, so we got Ahmed and did emergency wedding. तो बहुत शुक्रिया साहब। तो आगे बढ़ें या अभी बस, आप कुछ कहना thank you. चाहें? अच्छा, अगला जो दोस्त है उसको बुलवाने के लिए शिकागो से एक सीधी सड़क लेनी पड़ती है मशरक की तरफ। तो ओहायो में पहुँचें तो दाएं हाथ मुड़ना पड़ता है उसके। तो हमारी क्लास के एक ही बहुत ही नस्तालीक किस्म के आदमी से मुलाकात होती, अजीम बुखारी। तशरीफ़ लाइए साहब। और एक दरख्वास्त तो और है, जब आप आ रहे हैं जो भी, तो माइक के सामने अपना मुंह रखें तो लोगों को आवाज़ बेहतर आएगी। Assalamualaikum. I thought I had given my time to my friend and brother Tasneem, but since you asked me, I hadn't prepared anything. But I'll give you how I came to join medical college. I was never interested in medicine. I wanted to become a chemical engineer. I passed and I got admission in Punjab University. So my father said, I never thought you were so good at studies. I want you to become a doctor. I said, all my friends have gone ahead. Some have gone to Cambridge, Oxford, some are in the engineering university, and you want me to become a doctor? He said, yes, I want you to do that if you want to please me. I said, then I also have a condition. If I become a doctor, I give my exam again and pass, and on merit basis, I get admission. Then you're going to get me a car, because I'm not going to come from Model Town to Neela Gumbat in the bus every day. So he said, okay, done, I'll get you a car. So he kept his promise and got me a Volkswagen. So I wanted to get admission in intermediate again. So I went to government college and met the principal, and he said, you want to do intermediate again? You already have a first division, you have admission in engineering university. How will you be attending intermediate 1 and intermediate 2 at the same time? I said, I'll take care of it. He said, no, we can't admit you. So I went to FC college and the clerk refused me. So I saw the principal sitting in the office, and I said, that's my last chance, let me. I knocked on the door. I think it was Dr. Cornelius, that was the principal. So I went in there, young man, what do you want? So I'm related the story that I've got admission in engineering university, but my father wants me to do medicine, so that's why I would like to get admission and do. So you are listening to your father? I said, yes, your obedient son, admit.
That is the reason I'm admitting you, because you are listening to your parents. Not many people are doing it at this time. So I said, thank you, sir, and the rest is history. Thank you. You've done a wonderful job getting us all together. I have known all of you. I read the WhatsApp that comes in. No, don't contribute much, but I read everything, so I'm in touch with everybody. Thank you so much. अजीम का बहुत शुक्रिया कि इतने लायक फायक होने के बावजूद हमारे साथ कॉलेज में आ गए, वरना आज कहीं और बड़ी जगह पे बैठे होते. I never regretted doing medicine. Now my father always told me, didn't I make a good decision for you? You would have been an engineer, now you are a doctor and you are doing well. So We I are always thank him honored. for his change of profession. Absolutely honored. तो एक शेर सुनिए. रोज़ कहता हूँ कि अब उनको न देखूँगा कभी, रोज़ उस कूचे में कोई काम निकल आता है. So I'm going to invite Dr. Nasir Mubashir. टेक्नोलॉजी के माहिर हैं, ये भी MBBS में पता नहीं कैसे आए. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's so nice to meet so many of my classmates after a lapse of 51 years. And many thanks to the organizing committee who have done a wonderful job in making this happen. So the journey starts from 1965. So I stayed all 5 years in Broome Hostel, and many of my classmates also, I think, spent their 5 years in Broome Hostel. I think Bashir and Amjad, Ashraf, and Rashid also. So I start with Bashir. Bashir, from the beginning, he was a very inquisitive person, and he wanted to go into the depth of everything. And I think this potential and quality later made him to become an accomplished professor. Then Amjad Zahir, I used to call him a living encyclopedia because he had so vast general knowledge, and I think he still has it because we can read his comments in our WhatsApp page. And Ashraf Chaudhry, he's, I think, the gentlest person I have ever met. Yeah. Are you saying that because he's just sitting there? Oh, no, no. That's not the person we know. And he's still about, I think, 35 years old now. You can see him. And of course, Yusuf Chaudhry, we miss him. I wish he would have been here. When one of our classmates, Ikramullah Zafar, passed away, I became so depressed, and it was Yusuf, who tried and helped me out to get out of my depression. And since then, it has been a lifelong friendship with him. Then Saeed Anwar, I used to play table tennis a lot with him in the hostel. And Azam Khan, I remember he was a very good chess and checkers player in the hostel. And Rashid Javed Khan, I remember he was the only one, I think he had a blue scooter, Vespa scooter, right? Yeah, so whenever we heard the noise of the scooter, we knew Rashid was either coming in or going out of the hostel. And I was very much impressed by Rashid's generosity and hospitality, because most of the time he used to have visitors and guests, and he was always ready to entertain them. So I was so much impressed by his hospitality. ये मुझे वैसे यहाँ आके पता चला कि वेस्पा स्कूटर लड़कियाँ चलाती हैं इटली में. That's how it came to be. Well, that's Italy and Pakistan. Everybody used to have that. And a lot of friends resided in the other hostels in the complex, like Sultan,
Tasneem Raza, Mohsen, and Rafiq Khayali, Riaz Babar. I think there are a lot of them. So, and we used to enjoy the humor of Riaz Babar and, of course, the late Tanveer Ilahi Malik. And Sultan, as usual, used to be commenting on world affairs all the time, and I think he still does it. So that's a brief reminiscence of our days in college. And just to end that, I had a very adventurous life. I practiced 9 years in the plains of Punjab. Then I worked as a volunteer physician in the rainforests of West Africa for 8 years. And for the last quarter of a century, I've been practicing in the hills and mountains of Virginia. Thank you. That's truly a very varied and adventurous experience, and congratulations, really great. मुबशर हमेशा से बहुत ही धीमी तबीयत के और वाहिद आदमी हैं जो मुझे अपने दोस्त के हिसाब से उन्होंने कबूल किया, तो शुक्रिया आपका, वरना मुश्किल एक्सेप्ट आज। तो अगले जिस दोस्त को मैं बुलवाने जा रहा हूँ, तो अब चलते हैं खूबसूरत खिता कश्मीर में। हम लोग पाकिस्तानी वहाँ पे मुजाहिदीन भेजते थे, लेकिन ये मुजाहिद कश्मीर से हमारे पास आ गए, इनका शुक्रिया। मोहसन हमारी क्लास के नाशनास हैं गाने के हिसाब से, जो अफ़गानिस्तान के गाने वाले, बल्कि बहुत ही शन्नास आदमी हैं, गाते भी अच्छा हैं और गुनगुनाते भी हैं। तशरीफ़ लाइए, दोनों काम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा इन्होंने बताया, मेरा ताल्लुक़ कश्मीर से है। कल मैंने यहाँ बात की थी कि पाकिस्तान का मैं कितना एहसानमंद हूँ, उन्होंने मुझे मुफ्त में तालीम दी। ये अलग बात है, मैं आपकी तरह यहाँ छोड़ के आ गया, लेकिन पाकिस्तान का मैं बहुत बड़ा मखरूज़ और भी हूँ कि मैं 1964 में एक सूटकेस के साथ पाकिस्तान आया था, और आप सब ने और पाकिस्तान ने मुझे घर दिया, तालीम दी। सो बहुत बड़ा कर्ज़ा है मेरे सर पे। तो आप सबका शुक्रिया, पाकिस्तान का शुक्रिया। तो बशीर साहब ने मुझे कहा कि ये इस रियूनियन में ज़रूर आना, सब लड़के और लड़कियां आए होंगे। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ, यहाँ तो सब बाबे बैठे हैं। हाँ जी, टॉक अबाउट योरसेल्फ। मैं तो जनाब पाकिस्तान नहीं जाता इस डर से। पहले मैं जाता था तो कहते बेटा इधर आओ बैठो, फिर उसके बाद कहना शुरू किया भाई साहब इधर आइए, उसके बाद हो गया अंकल इधर आइए। अब मेरे में जुर्रत नहीं है कि मैं जाऊँ, मुझे कहे बाबा जी इत्थे बैठो। अब तो वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूँगा। और फिर जो जिनको हम हमारी लेडी डॉक्टर फ्रेंड्स हैं, उनका आपको मैं बताऊं कि शुरू से बहुत खौफ रहा है मुझे उनका। तो मैं ये भी जानता हूँ कि ज़्यादातर जो हमारी मेल क्लास थी वो लड़कियों से दूर ही रहती थी, सवाए में भी तस्नीम रज़ा के, इसलिए कि वो वहाँ इनकी बहन थी। तो कुछ डरे डरे से घबराए हुए रहते थे। तो मैं तो बहुत ज़्यादा घबराया रहता था, क्योंकि मैंने एक फ़िल्म देखी थी कुछ साल पहले। तो कॉलेज का सीन था और एक लड़का और लड़की जा रहे हैं, तो लड़के ने लड़की को अप्रोच करने की कोशिश की, तो लड़की ने उसको ज़ोरदार थप्पड़ मारा कि तुमको शर्म नहीं आती, मुझसे बात करने की कोशिश करते हो। तो वो जब भी मैं क्लास में बैठा होता था तो मुझे वो सीन बार बार याद आता था। तो उस वजह से मैं घबराया कमर के साथ बैठा हूँ, इसकी वजह ये मौसम है। तो 4 फुट का डिस्टेंस मैं रखता था कि वहाँ हाथ नहीं पहुँचता थप्पड़ वाला। और जो
लाइन ऑफ साइट जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं उससे भी ज़रा दूर रहता था. उस वजह से ज़्यादातर लोग मुझे जानते भी नहीं थे. तो बहरहाल वो अच्छे दिन थे. तो अभी मैं ख़वातीन से घबराता हूँ. जी अब लेकिन अब मैंने 2-3 दफ़ा कोशिश की कि मैं शाइस्ता साहबा के पास जाऊँ, पूछूँ आपकी तबीयत कैसी है, ऑपरेशन कैसा रहा, लेकिन वो कपी तारी हो गई मुझे, तो मैं फिर नहीं गया. तो बहरहाल अब दूर से मैं आपको कहता हूँ कि खुदा आपको सेहत दे और आप जल्दी फुल रिकवरी करें. अब शाहिद भाई से दूर रहिए वैसे ये कह के. हाँ वो भी है, सोचने की बात है. लेकिन जो ये औरतों का खौफ था वो फिर बाद में मेरी शादी हो गई, तो पता चला कि ये वाकई सही था, बिल्कुल कोई गलत बात नहीं. फिर ये बात है कि इतनी रिस्ट्रिक्शन आप लोगों ने लगाई हैं इस पे कि ये नहीं कहना वो नहीं कहना, तो मैं मज़ाहिया होने की कोशिश कर रहा हूँ. तो वो आज मौका है. वो तो और बीवी भी ऑडियंस में नहीं है. तो मैंने ज़िंदगी में, आप सबको मालूम होगा जो मुझे जानते हैं, कि मैं सीरियस स्टूडेंट था, किताबों से बाहर कम ही निकलता था. तो ना किसी से ज़्यादा हल्ला गुल्ला नहीं करता था. टक शॉप पे भी कम ही जाता था, एक समोसा खा के चलो. तो ज़्यादा सीरियस था मैं. तो ये ज़्यादा मजाक वगैरह नहीं करता. फिर मैंने 1-2 बार कोशिश की शादी के बाद, जरा स्टेबल हो गया, तो एक दफ़ा मैंने अपनी बीवी की फ्रेंड से कुछ कहा ऐसे, वो सारी कम्युनिटी में झगड़ा हो गया, क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं करते मुझसे ऐसी बातें करना. फिर मेरा एक, आप नाम मैं नहीं लूँगा, हम सब का एक अज़ीज़ दोस्त जो इस ऑडियंस में नहीं है, एक दफ़ा मैंने उससे मजाक किया. 40 साल उसने मुझसे बात नहीं की. फिर कहीं मैंने मुझसे मिन्नत, ये फेसबुक की बदौलत मेरी बीवी ने कहा कि वो फेसबुक पे है. फिर मैंने उसको, होटल में था, मैंने उसको अपने घर लाया. उससे 40 साल लग गए. तो अब ये ज़रा केयरफुल रहना पड़ता है. लेकिन सब कहते हैं सुल्तान से जो मर्ज़ी तुम कर लो, ही इज़ ऑल फेयर गेम जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं. तो अभी रिसेंट ये सब पॉलिटिक्स की बातें हो रही थी, तो मैंने कहा मैं भी सुल्तान से मजाक कर लेता हूँ. 3 महीने नाराज़ रहा मेरे से, बड़ी मुश्किल से अब ठीक हुआ है. अब मौसम ने कहा कि मौसम एक समोसा खाते थे, वो इसलिए कि बाकी हम खा जाते थे. नहीं, वो सिर्फ सुल्तान समोसा नहीं खाते थे. अब मैं सीक्रेट बताऊं कि वहाँ हॉस्टल में हाज़री सिस्टम था. हाज़री होती थी कि वो एक हाज़री का एक मील मिलता था खाना. तो सुल्तान की हाज़रियाँ मालूम नहीं क्यों ख़त्म हो जाती थी. तो महीने के आखिर में फिर मैं इसको अपनी हाज़रियाँ दे देता था ना. तो से एक समोसे की बात नहीं है, बात दूर तक जाती है. लेकिन ये आपको मैं ये बताऊं कि सुल्तान, शायद आपको ये मालूम नहीं होगा कि आप सबसे ज़्यादा पुराना दोस्त मेरा सुल्तान है, क्योंकि जब प्री मेडिकल इंटरमीडिएट में मेरे साथ एडवर्ड्स कॉलेज में सुल्तान पढ़ता था. तो मैं पढ़ाकू था शुरू से. तो सुल्तान इंटेलिजेंट था बहुत, पढ़ाकू इतना था या नहीं, ये तो ऑल राउंडर था, क्रिकेट खेलता था और चीज़ों के शौक़ थे. तो ये वहाँ क्लास में टॉप करता था हमेशा. इट वाज टेकन फॉर ग्रांटेड फर्स्ट तो सुल्तान नहीं आना है. तो मैं वहाँ कश्मीर से आया तो सेकंड ईयर में, तो मेरा तो काम था, मैं 16 घंटे पढ़ता था दिन में, और सुल्तान बैठा वहाँ पे क्रिकेट खेलता था, नहीं तो टक शॉप में अपनी ऐसे स्पिन प्रैक्टिस करता रहता था. सुल्तान इतना अच्छा खेलता है कि बैठ के क्रिकेट खेल लेता है. तो वहाँ से फिर क्या हुआ कि फिर मैंने फर्स्ट आना शुरू कर दिया. लेकिन फिर हम फर्स्ट और सेकंड दोनों किंग एडवर्ड में आ गए. तो उस वक्त से मैं इसको जानता हूँ. बहुत ही अच्छा आदमी है, बहुत ही अजीज़ दोस्त है. वो कि नाराज़ हो गया था थोड़ी सी बात पे, लेकिन अब मैंने सोचा मैं कोई नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ बात नहीं करूँगा. तो अब ठीक हो गया थोड़ा. आज सुबह कोशिश की थी इसने, मैंने कहा नहीं, आई विल नॉट फॉल फॉर दैट. हाँ, ये बेट डालता है आपको, नहीं है यहाँ पे, वो इसको समझ गया अब. और जस्ट स्मॉल नोट अबाउट
शौकत ज़मान। शौकत ज़मान मेरा बहुत ही प्यारा दोस्त था, बहुत जल्दी इस दुनिया से चला गया। मैं आपको बताया, मैं कश्मीर से आया बेवकूफ़ सा लड़का था। बड़े शहर लाहौर में मुझे समझ नहीं आती थी क्या करना है, और इतने बड़े कॉलेज में तो वो मुझसे ऐसे करता था जैसे छोटे बच्चे को लेके कोई उंगली से चलता है। हर चीज़ उसने मुझे बताई, और उसने मुझे बहुत कोशिश की कि मैं वर्ल्डली वाइज हो जाऊं, लेकिन वो हुआ नहीं। तो उसकी याद आज बहुत आती है। अल्लाह उसको जन्नत में जगह दे और मग़फ़रत करे। तो बस इतना ही। अब इन्होंने कहा है कि मैं कोई गाना वाना गाऊं, तो मेरा ख्याल और लोगों को मौका दें, फिर क्या होगा कि जब लंच खाएंगे या उस वक्त दिन के आखिर में करेंगे। Doctor, I just want to say something about Dr. Mohsen. He's actually indirectly related to me. My bhabhi is his first cousin, Sheba. जी, I know, of course. No. Of course. All right. वैसे वो सुल्तान ने ले लिया। वो उसमें क्या हुआ कि बक्से में मैंने अपनी शॉर्ट स्टोरीज लिखी थी, और मैंने कुछ फर्जी लव लेटर्स लिखे थे। तो जब मैं पाकिस्तान से यहाँ आया तो मैंने बक्से में डाल के रख दिया वहाँ। पाकिस्तान छोड़ा है। तो उसके बाद जब मेरे वालिद फौत हो गए तो उन्होंने कहा वो तुम्हारा सूटकेस इतने सालों से पड़ा है, उसको क्या करना है? तो वो फिर फेंक दिया। एक दफा मैं ते बशीर उथे रावी ते गए कश्ती ते वो उथे के बक्सा वो नाल रड़दा जा रहा